important as Rahul Dravid in Bangalore. But Rohan Deshmukh is a man who we've heard from earlier today. Sanjay, very good evening to you. I'll come to you in a second, but let me go to Bangalore first, where Rohan is at the all-new NCA. We heard from you a little while earlier in the day too. अब एक पूरा दिन हो चुका है. आपने Indian team की training भी देखी है, Rohan. Give me the highlights. What did you see? What stood out? Well, a big day for the Indian cricketers today. पूरा दिन उन्होंने आज यहाँ पर प्रैक्टिस की है. A 6-hour training session with a 45-minute break for lunch. But what we saw today was really a lot of time spent in the middle. Usually we see during Indian team's net sessions that they come, they do their warm-ups, they go into the nets, they spend some 20 minutes in each net. As Sanjay Bhai will know, he will know better how the usual net practice session goes by. But since this being a camp, there was a center wicket practice simulation which took place. यानी कि जो प्लेयर्स है वो पेयर्स में उन्होंने बैटिंग की है. रोहित शर्मा ने ऑलरेडी एशिया कप के स्क्वाड अनाउंसमेंट के वक्त ड्यूरिंग सिलेक्शन डे पीसी ही हैड ऑलरेडी मेंशन्ड व्हाट कुड लाइकली बी इंडियाज बैटिंग ऑर्डर. सो रोहित शर्मा obviously was batting with Shubman Gill. Then we saw Virat Kohli and Shreyas Iyer batting together. Very importantly, and which everyone wants to know how KL Rahul is progressing. Even KL was seen practicing. Then we saw the other batters, Jadeja and Hardik, batting together. So everyone batting in pairs and batting for almost an hour. So that really tells you that they spent quality time. And it's not just like it's an open net session where you have nets on the sides. You had fielders, you had the wicket keepers around as well. So 6 hours of training, which with each pair spending close to an hour or a little more than an hour practicing in the nets as well as practicing at the center wicket. It's been a long day for the boys here. Okay, fantastic. Let's go straight into that. Let me go to Sanjay Bangar. Sanjay, हम सब के लिए आपके लिए शायद ये normal होगा या standard होगा, but this is great insight for us. An open net or a match simulation sort of situation जहाँ pairs में batting की जाती है. What is the team trying to achieve जब ऐसा होता है एक घंटे के लिए आप अलग-अलग pairs से batting करवाते हैं? सबसे पहली बात है कि आप 50 ओवर फॉर्मेट के लिए तैयार हो रहे हैं और इसका मतलब ये है कि आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा जैसे जैसे हम प्रोग्राम में बताएंगे कैसे बैटिंग हुई कैसे बॉलिंग हुई. मगर सबसे ख़ास बात यह है कि लंबा स्पेल डालना और कुछ अंतराल के बाद स्पेल डालना, क्योंकि जनरली छोटे सेशन में क्या होता है कि आपने आपके ग्रुप को बॉलिंग डाल दिया फिर आप अंदर जाके बैठ जाते हैं या फिर आप बैटिंग का वेट करते हैं. मगर यहाँ पर कैसे होता है कि या तो जिन्होंने बाद में बैटिंग की वो थोड़ा पहले फील्डिंग करेंगे, तो फील्डिंग करने के बाद बैटिंग का एक प्रैक्टिस हो जाता है. बॉलर्स थोड़ा सा 2 या 3 स्पेल में आते हैं, उसका मतलब आपको वार्म अप करके वार्म डाउन होके फिर भी एक्टिव रह के दोबारा से सेकंड स्पेल में अच्छी डालनी है, थर्ड स्पेल में अच्छी डालनी है. तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कंडीशन करना और जो निगल्स है या फिर थोड़ा सा जो स्टिफनेस हो जाता है उससे कैसे प्लेयर्स डील करते हैं, उसके लिए खास ही अभ्यास हम मतलब हमारी टीम ने आज शायद उस तरह से प्लान किया होगा. Okay, just before I go back to Rohan, Sanjay, रोहन ने कहा कि विराट एंड श्रेयस अय्यर batted together. Does that give us an indication कि शायद श्रेयस अय्यर is the first choice number 4 for India's opening game? और होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है, श्रेयस अय्यर सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर रहे. मेरे ख्याल से जो भी खिलाड़ी 4 नंबर पे बल्लेबाजी की है पिछले 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ श्रेयस अय्यर को मिली है और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. स्पिन के खिलाफ वो उनका मतलब जो डोमिनेट करता है वो काफ़ी मददगार साबित करता है. जब ऊपरी क्रम वाले 1, 2, 3 के साथ अगर कोई भी उनके साथ बैटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो मेरे हिसाब से ज़रूर वो फ्रंट रनर रहने चाहिए नंबर 4 के लिए. Okay, let's go back to Rohan. रोहन, विराट कोहली की बात करते हैं. हमने कल देखा उनके इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने यो-यो टेस्ट के बारे में काफी कुछ कहा. And there's no such thing as an off day for Virat Kohli. He's training hard, no matter whether there's a camp on or practice on or not. He did more than just bat in pairs. आपने क्या देखा from a Virat Kohli perspective from his training today in Bangalore? Well, it's a typical Virat Kohli practice day, to be honest, and we would like to know more from Sanjay Bangar on what's the mindset when he does this. So typically, Virat comes for practice. He goes into the nets. He likes to do some knocking before starting his regular business.
playing against throwdown is probably one of his favorite thing to do at the nets. हमने बहुत बार देखा है कि वो consistently जो है throwdowners के खिलाफ वो जो है खास करके बैटिंग करते हुए नज़र आते हैं. शुरुआत उससे अगर करते हैं, बहुत बार देखा है कि शुरुआत हम ने देखा है विराट कोहली को कि वो throwdown जो देते हैं उनके खिलाफ खेलते हैं. तो तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट तक का समय जो है उन्होंने थ्रोडाउन जो दे रहे थे उनके अगेंस्ट स्पेंड किया. और फिर हमने देखा कि हार्दिक पांड्या ने भी उनको गेंदबाजी की. साई किशोर जो कि एक नेट बॉलर है, नेट बॉलर उनको कहा है कहना ठीक नहीं है क्योंकि वो रेकनिंग में है इंडिया के लिए, इंडिया ए टीम्स के लिए. तो साई किशोर यहाँ पर उन्हें गेंदबाजी करते हुए हमें नज़र आया. कुलदीप यादव ने भी गेंदबाजी की. तो बिफोर ही वेंट इनटू लेट्स से द सेंटर विकेट प्रैक्टिस, वी सॉ Virat and Shreyas both undergo this kind of drills as well, playing against the throwdown givers and also some spinners before they went and spent a significant amount of time, close to 1 hour I can say that they spent in the nets batting together. Okay, that's fascinating insight, संजय, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि अगर कोई एरिया है जहां हम क्लोजली देखना चाहेंगे विराट कोहली के गेम को, इट्स हाउ ही काउंटर्स लेफ्ट आर्म स्पिन. दैट्स हाउ ऑपोजिशन टीम्स टेंड टू लाइन अप अगेंस्ट हिम. रोहन टेल्स अस कि साई किशोर वहां शामिल है, मौजूद है. कुलदीप यादव के सामने उन्होंने बल्लेबाजी भी की. So what do you think Virat Kohli is, what would the team be trying to focus on when it comes to Virat Kohli in this kind of camp? जो भी मैंने विजुअल्स देखे उसमें विराट कोहली का टेम्पलेट बहुत साफ रहता है कि वो अपने बेसिक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं. तो आपने देखा कि जब भी तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो बहुत सेटअप अर्ली कर रहे थे. उनका जो इनिशियल मूवमेंट है वो ख़त्म हो जा रहा था जब वो गेंद डिलीवर होने वाली थी, और एक पॉज लेने के बाद मतलब बिल्कुल स्थिर थी उनकी नज़र, उनका सर जब गेंद रिलीज़ होती है. तो उसके ऊपर उन्होंने तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ काम किया. और फिर जब स्पिनर्स आए तो थोड़ा सा हमको फुटवर्क कुछ अलग देखने को मिला. उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की फ्रंट फुट प्रेस की कि किस तरह से फ्रंट फुट प्रेस करके फिर आप वहाँ से आगे जा सकते हैं, या फिर फ्रंट फुट प्रेस को कैसे वेट ट्रांसफ़र करके बैक फुट पे जाके वो पॉइंट और कवर एरिया में काफ़ी बार वो बॉल को धकेल रहे थे. तो उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखे. All right, yes, and this is great insight that we're getting. I hope you're with us on this Friday evening. जहां इंडिया की जो स्क्वाड एशिया कप के लिए है, we will get more insight. Joining us wherever you're joining us on multiple platforms. You're on Star Sports for the Blues. Live is giving you exclusive and elusive insight on the Indian team's training. ये है एशिया कप की स्क्वाड. सैमसन इज ऑफ कोर्स अ बैकअप, लेकिन इस स्क्वाड के अलावा भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बैंगलोर में एट द कैंप, they are part of the match simulation, part of the training. So Rohan Deshmukh has been monitoring them all day. So Rohan, you already gave me some fascinating insight that Sai Kishore was bowling to Virat Kohli today, Kuldeep Yadav as well. Tell me, from what you've seen, were there any other players outside of this squad that were also part of the preparatory camp? और उसके अलावा क्या सारे ये players मौजूद थे आज? Everybody was there at the NCA today? Yes, here at the Allur and the KSK facility at Allur, Raunak, everyone who has joined the squad were here. They were practicing, except for those players who are on their way from Ireland. They will possibly come tomorrow or day after taking some rest. The interesting thing that I figured out, or I actually found out, was the amount of net bowlers who have come and the quality of the net bowlers. I mean, we usually have seen when Indian camp happens, you have a lot of net bowlers who sometimes 5 are requested to come, but at least there are 13 to 15 net bowlers, and these net bowlers are not your academy net bowlers, all right. These net bowlers are someone like Aniket Chaudhary, who's probably the tallest left arm seamer in the country. You have the fastest bowler in the country, Umran Malik. Umran Malik is here. Someone who follows Umran Malik in the speed range, Kuldeep Sen. Kuldeep Sen is here. Yash Dayal is here. Rahul Chahar is here. Sai Kishore is here.
Tushar Deshpande is here. These are just a few of the names. The kind of quality of net bowlers who are here, the kind of planning has actually gone behind this. You really need to credit the team management to get the quality, the best quality bowlers, apart from those who are selected in the Asia Cup squad or who are in Ireland, to come and join and bowl to our batsmen and really prepare them for what lies ahead. This is absolutely something which probably we have not seen before, where so many quality bowlers, probably the entire, we can see the pool of Indian bowlers, fast bowlers or spinners. They are both here at Uluru and bowling to the Indian team, making sure that they practice and they are ready for what lies ahead when the Asia Cup starts. That is really fascinating, Rohan. I'm going to go to Sanjay and exactly on the question that he raised at the end, Sanjay, कि क्या ये in a way first time हम देख रहे हैं कि the quality of domestic players that are part of a pre-tournament camp, is that something rare? क्या ये पहले भी हो चुका है at your time as batting coach with the Indian team? और जहाँ तक fast bowlers के नाम रोहन ने लिए, the likes of Kuldeep Sen and Yash Dayal and Tushar Deshpande, we know that Rohit Sharma has already said, as we look at India's fixtures for the Asia Cup 2023, that pace will play a big part. There's a heavy pace attack that's been named with Prasidh and Bumrah and Shami and Siraj, and you mentioned, you heard the names that Rohan mentioned. So tell me a little bit about whether this is unique, Sanjay, in Indian cricket, and what sort of role you expect pace to play. यूनिक बिकॉज इन द लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स, बिकॉज जिस वर्ल्ड कप का मैं हिस्सा था दोनों ही बार वर्ल्ड कप जो था, एक बार ऑस्ट्रेलिया में था, एक बार इंग्लैंड में था. तो ऐसे इतने सारे तेज़ गेंदबाजों को या इतने सारे हाई क्वालिटी डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. दूसरी चीज़, एक और चीज़ काम में कर जाती है, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है भारत में, और ऑफ सीज़न होने के कारण ये सारे जो खिलाड़ी है वो अवेलेबल है, तो उनका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो रहा है. और इतने हाई क्वालिटी या परफॉर्मर्स जो रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये डबल एज्ड एडवांटेज होता है, क्योंकि जो सारे सेटल्ड टीम, मतलब जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, उनको पता चलता है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स जो खिलाड़ी कर रहे हैं वो आईपीएल के बाहर या नेट्स में कैसे वो डील करते हैं, उनके एक्चुअल काबिलियत क्या है, तो वो भी उसका अंदाज़ा आता है. और फिर जो नेट बॉलर्स है उनका ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको क्वालिटी बैट्समैन को डालने का मौका मिलता है, और इट्स अ विन विन फॉर ऑल. सो ये बहुत बड़ी पहल है, और ज़रूर पिछले 7-8 सालों में, पिछले 2 वर्ल्ड कप में हम कर नहीं पाए थे, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत के बाहर था, मगर यहाँ पर भारत के पास है और ऑफ सीज़न में है, तो पूरा उनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो रहा है. I think it's a great point. 15 May Australia जो World Cup था, that was of course in March, April. In 2019 in England, it was in June, July. So you can see the benefits here of a unique World Cup जो इंडिया में खेला जाएगा, as we all know, in October, November and August being the off season. Now, what about KL Rahul? I'm sure ये सवाल सबके मन पे होगा ही, रोहन, कि किस तरह की फिटनेस और फॉर्म में नजर आए KL Rahul. We heard from Ajit Agarkar that there was a bit of a fresh niggle that perhaps could come in the way of Rahul playing that first game against Pakistan in the Asia Cup. Now, was he there? How much did he spend time in the nets? Did you see him keep? What can you tell us about KL Rahul? Well, we definitely saw Ishan Kishan do his keeping skills today. He was one of those, he was the keeper who went and with the fielding coach T. Dilip was doing his wicket keeping skills, enhancing his wicket keeping skills. As far as KL Rahul is concerned, he did his warm-up drills. He spent some time with the fitness trainer as well, was undergoing some drills, and to be honest, he went and he batted for a long time. So clearly batting is something which is not an issue. It's a slight niggle, as the chief selector said. It's a niggle. It's when you say it's a niggle, it's not something serious. So they are just hoping. Everyone in the team management, the selectors, even the fans, everyone know how important KL Rahul is for this for the Indian cricket team. And clearly, if there are any chances, then they probably don't want to take any chances with KL Rahul. They want to ensure that he slowly recovers, and we are seeing that he's spending time on his fitness, but he's also doing his batting skills, and he's doing it well. He's running between the wickets. He batted close to an hour as well. So in terms of batting fitness, clearly KL is right there. It's probably just that niggle which probably everyone is waiting that it goes away in some time. Okay, that is great, Sanjay, क्योंकि हमने ये भी सुना अजित आगरकर से at that press conference कि शायद पहला मैच नहीं खेले KL Rahul, but Indian team is hopefully plays perhaps a bit later. Now, जिस तरह रोहन ने कहा, he's spending time batting and he looks fine batting. शायद problem हम assume कर सकते हैं it's related to his keeping. In that case, how would you like to handle a KL Rahul? Do you think he should
get a game, even if he's playing बतौर as a बल्लेबाज, क्या आप KL राहुल की बैटिंग को भी थोड़ा सा समय दे, या does he sort of get in only once he's ready to be a keeper batter? आई थिंक कीपर बैटर, क्योंकि भारत के टॉप 5 में कोई भी गेंदबाजी नहीं करता है। उसका मतलब क्या है, अगर आपको मतलब आपके 6 बॉलिंग के ऑप्शन चाहिए तो ज़रूर आपके टॉप 5 में या तो विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए या फिर एक बंदा जो गेंदबाजी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उनका खेलना तभी संभव या होना चाहिए जब वो विकेट कीपर के बतौर भी अपनी भूमिका निभाते हैं, तब टीम का बैलेंस बहुत बेहतर तरीके से बनता है। और अगर वो फिट नहीं है बतौर बैट्समैन तो ईशान किशन हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो बेटर विकेट कीपर है, रेगुलर विकेट कीपर है। और 50 ओवर के फॉर्मेट में भारत जहाँ जहाँ खेलने वाला है, तो आप ज़रूर यही चाहेंगे कि एक फिट और नंबर 1 विकेट कीपर को प्रावधान दिया जाए, ना कि एक हाफ फिट या फिर जो जिसके दिल में थोड़ा सा संकोच हो कि क्या वो उनको इंजरी हो जाएगी, तो वो आप मतलब उस लटकती तलवार के साथ आप इंपॉर्टेंट मैचेस में जाना नहीं चाहेंगे। ऑलराइट, ब्रिलियंट। अभी जाते जाते रोहन से एक ही सवाल है कि भाई कल का क्या प्लान है आपका भी और इस टीम का भी? The weekend is not going to be as exciting perhaps as Sanjay, Bangar and myself. We're going to be busy working, but tell me, Rohan, from what you've gathered, what can we expect from this Indian team tomorrow at their camp? Well, Raunak, you said it's not going to be exciting, but one thing is for clear for these cricketers, for all of them who have assembled here, being in this camp is really, really exciting thing to look forward to, because this is the amount of time, the kind of time that they will get here to prepare for the Asia Cup. Probably won't get again after the Asia Cup as well. So they're really excited is all I can tell. Tomorrow we'll probably follow the same routine. We have to wait and see what kind of drills and what kind of simulations the Indian team management have in mind for the boys, as we will know as the day progresses. All right, brilliant. Yes, of course. When I say exciting, I mean we normally take time off work towards the end of the weekend, but that is not something that the Indian team can afford. But this is really exciting and insightful. Rohan Deshmukh, thank you so much. We're going to keep bothering you, and you need to keep bothering that Indian team practicing over there. Give us all these wonderful insights. Mohammad Siraj, the pace battery. We'll see Jasprit Bumrah, I'm sure, also join the Indian team very soon. Sanjay Bangar, बहुत dhanyawad to add some greater light to the perspective that we're already getting. We will hear more from you as well, Sanjay, as we look to get to the best inside, the inside scoop, as well as the very latest from the Indian team's training camp in Bangalore, right here on Follow the Blues Live. Every day we'll be with you on our social handles, so make sure you tune in. We'll have you covered with whatever questions, jo bhi sawal aapke honge regarding this Indian team as it builds up for a massive 2 months for the Asia Cup and the World Cup. So do join us tomorrow as well, and watch out on our social handles for when Rohan Deshmukh and the rest of our crew gives us updates. For now, from Follow the Blues Live, that's all. We'll be back with more very soon.